सज्जनों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी का साहित्य अकादमी की तरफ से। हमारे आज उन्मेष का आज अंतिम दिवस है। हमारी तीसरा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसका विषय है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर चर्चा करने के लिए बहुत ही प्रख्यात विद्वान देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पधारे हैं। दरअसल भारत की संस्कृति और उसकी विरासत इतनी व्यापक है और भारतीय साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति इतने विशाल और व्यापक रूप से हुई है, इसलिए साहित्य उसका संरक्षक भी है, उसका संवर्धन भी साहित्य करता है और उसके प्रचार प्रसार में भी साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस रूप में इस अनन्य संबंध को किस रूप में आपके समक्ष चर्चा के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, अध्यक्ष महोदय का यह विशेषाधिकार होगा कि वो स्वरूप दे सकें। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस सत्र में अध्यक्षता के लिए कन्नड़ा के बहुत ही प्रख्यात विद्वान लेखक आदरणीय एस.एल. भैरप्पा साहब हम सब के बीच पधारे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ इस सत्र की अध्यक्षता के लिए। उनकी उपस्थिति अपने आप में हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और वे अध्यक्षता भी कर रहे हैं। इस रूप में हमें ये विशेष हमारा ये गौरव की बात है, मान की बात है। गुजरात से प्रख्यात कवि और लेखक भागेश झा जी भी हम सबके बीच में हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण करें इस सत्र में। दिगंत विश्व शर्मा जी, उनसे प्रार्थना करूंगा। असमिया भाषा के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक और अनुवादक के रूप में आपको जाना जाता है। दिगंत विश्व शर्मा जी। मीडिया और साहित्य क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित विभूति मयंक कुमार अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएँ और स्थान ग्रहण करें। और हिंदी के कवि, लेखक, संगीतकार, सिनेमा के विद्वान, इन तमाम रूपों में जिनकी प्रतिष्ठा है, श्री यतीन्द्र मिश्र, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी यहाँ मंच पर आकर इस सत्र में अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा बढ़ाएं, इसकी शोभा बढ़ाएं और इस चर्चा को नए आयाम अपनी उपस्थिति और अपने अनुभव से दें और रखें, ताकि हम सबको भी लाभ हो और साहित्य अकादमी का जो उद्देश्य है उन्मेष का, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो एक बार सभी के लिए आपकी करतल ध्वनि स्वागत के भाव के साथ। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से, हमारे सचिव साहित्य अकादमी की, वो आएँ और विधिवत अंगवस्त्र भेंट करके इन सभी विभूतियों का, विद्वज्जनों का यहाँ पर मंच पर स्वागत करें। श्री एस.एल. भैरप्पा साहब अध्यक्षता जो कर रहे हैं इस सत्र की, सबसे पहले आपकी सबके सम्मान से भरी करतल ध्वनि के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। मयंक कुमार अग्रवाल जी, जो मीडिया और साहित्य क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित विभूति हैं, उनका भी इस अवसर पर स्वागत है। और यतीन्द्र मिश्र जी, हिंदी के कवि, लेखक, संगीतकार, सिनेमा का विद्वान। भागेश झा जी, गुजराती भाषा के बहुत ही प्रख्यात विद्वान हैं और गुजराती साहित्य अकादमी के वर्तमान में आप अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ असमिया भाषा के प्रतिष्ठित लेखक, अनुवादक दिगंत विश्व शर्मा। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का, वंदन आप सभी का और आभार डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी का। चूँकि आरंभ में ही सभी वक्ताओं का मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं, ताकि सत्र के दौरान अध्यक्ष महोदय जिस रूप में भी उसको बढ़ाना चाहेंगे उन्हें सुविधा होगी। आप सब जानते हैं एस.एल. भैरप्पा साहब, जो कि कन्नड़ा के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान हैं, और आपकी प्रकाशित कृतियों में आपकी जो आत्मकथा है और इसके अलावा दर्शन शास्त्र की भी 5 पुस्तकें शामिल हैं और 25 उपन्यास आपने लिखे हैं और लगभग सभी उपन्यासों का संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। तो उनके लेखन की व्यापकता जो है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस रूप में, कितने व्यापक स्तर पर वो चीज़ें पहुंची हैं पाठकों तक देश के। आपकी कई कृतियों पर फिल्मों का भी निर्माण हुआ है, जिन्हें आलोचकों से बहुत प्रशंसा मिली है, भूरी भूरी प्रशंसा प्राप्त हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान 72 सदस्यता यानी फेलोशिप, कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, पंपा पुरस्कार, नदोजा पुरस्कार, एनटीआर राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार साहित्य अकादमी के फेलो के साथ साथ आपको मिले हुए हैं। और 6 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की, ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि भी आपको प्राप्त है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय एस.एल. भैरप्पा साहब का। भागेश झा जी, भागेश वी झा जी, गुजरात विश्वविद्यालय से संस्कृत में आपने स्नातक किया, फिर एलएलबी की डिग्री प्राप्त की, एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और उस रूप में भी राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रकाशित कृतियों में 3 तो कविता संग्रह हैं, पहाड़ उगलता रहा,
मीरानी जेम माने मालाजोंद, संकोच येलु मौन और निबंध संग्रह जो आपके प्रकाशित हुए हैं, टैबलेट ने अजवाले पानबाई, समय स्तोत्र, अने वा वलांके और अमुक, ये प्रमुख जो है निबंध संग्रह हैं आपके। गुजराती साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए आपको हरिंद्र दवे पारितोषिक और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से संस्कृत सेवाव्रती पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है भाग्येश झा जी का। दिगंत विश्व शर्मा जी, असमिया भाषा के लेखक और अनुवादक के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। 7 पुस्तकों का आपने हिंदी अंग्रेजी से असमिया में अनुवाद किया है और जो आपको पुरस्कार मिले हैं इस क्षेत्र में योगदान के लिए, डॉक्टर मैदुल इस्लाम बोरा लिटरेरी पुरस्कार, इस तरह के अन्य पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। मूल रूप से श्री अरबिंदो द्वारा लिखित जो कृति है भारतीय संस्कृति भित्ति का अनुवाद आपने किया है और उसके लिए आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आसाम साहित्य सभा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, भारतीय इतिहास संकलन समिति असम और भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर असम के आजीवन आप सदस्य हैं और बहुत सारे सम्मान और पुरस्कारों से अलंकृत हैं। दिगंत विश्व शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है दिगंत जी का इस आयोजन में। दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके और दूरदर्शन के डीजी, प्रिंसिपल डीजी, दूरदर्शन न्यूज़ और साहित्य में अपने लेखन से अपनी विशिष्ट छाप रखने वाले श्री मयंक कुमार अग्रवाल जी हम सबके बीच इस सत्र में उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत है। प्राचीन भारतीय किंवदंतियों पर आधारित श्री मयंक अग्रवाल का उपन्यास द राइज ऑफ द देवास, अंग्रेजी में ये पुस्तक आपने लिखी है और इसका हिंदी अनुवाद देवों का उदय बहुत पसंद किया गया, बहुत चर्चित रहा ये। और भारत सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं आप, जिसमें मैंने बताया कि सीईओ प्रसार भारती और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर आपने कार्य किया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD मलेशिया के मानद अध्यक्ष के रूप में भी आपने दायित्वों का निर्वहन किया है और संस्थान ने उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो इस रूप में यह हम सबका सम्मान है आपको अपने बीच पाकर। बहुत बहुत स्वागत मयंक कुमार अग्रवाल जी का। यतेंद्र मिश्र जी हमारे इस सत्र में एक विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। बहुत ही प्रख्यात हिंदी कवि, लेखक, संगीतकार और सिनेमा के विद्वान के रूप में वो जाने जाते हैं। आपके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा आपने गिरजा देवी, सोनल मान सिंह जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे उस्तादों और विद्वज्जनों के जीवन के बारे में बहुत विस्तार से और बहुत शोधपरक पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हुई। आपने 12वीं शताब्दी के लिंगायत रहस्यवादी कवि अक्का महादेवी की कविता भैरवी का भी अनुवाद किया है। हिंदी सिनेमा के 100 साल के बारे में हमसफ़र किताब जो आपकी बहुत चर्चित हुई है, जो आपने लिखी है, आप शहरनामा फैज़ाबाद उसके संपादक हैं, एडिटर हैं और आपने संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका संगना का भी संपादन किया है। आपकी पुस्तक लता सुरगाथा व्यापक रूप से प्रशंसित पुस्तक है। आप 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए जो उन्हें मिला था ये पुरस्कार, उससे सम्मानित हैं और इसके अलावा द्वारिका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ पुरस्कार, अन्य बहुत सारे पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है यतेंद्र मिश्र जी का। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय SL भैरप्पा जी से कि वे इस सत्र का विधिवत शुभारंभ करें अपने आरंभिक उद्बोधन के साथ। Friends, there are 4 speakers who are equally distinguished. Any one of them could be the chairman of today's function. I know that they have selected me because of my age. Thank you. Now, we have 90 minutes time, 4 speakers, and me. I take 15 minutes
I do not like to speak in the forum of a lecture. I will just put before you some facts only. Only facts, I don't explain it. And because I put only facts, because facts speak more eloquently than lectures. Now, first fact. Sardar Patel started building Somnath temple, but after his demise, K.M. Munshi completed and then invited Dr. Babu Rajendra Prasad to inaugurate it. Prime Minister Nehru wrote to the President not to participate since India is a secular country. But President Rajendra Prasad ignored it. But since all the states had Congress governments and Nehru was all powerful, it became an unwritten law that ministers should not visit any Hindu temples. But they could visit churches and masjids wearing Islamic caps, because India should give special privilege to the minorities. And point 2. On 2014, when Modi ji swore as Prime Minister, the first thing he did was to worship Pashupatinath temple of Nepal. And Modi donated 20 crore rupees and 15 kgs of Srigandha Patinath temple. Not only that, whenever he went to any place, he used to visit the temple and offer worship to that temple. And then BJP ministers and politicians, not only BJP ministers and politicians, but even the Congress ministers and politicians of Pandit Nehru's party also started visit temples and pray for political success. It means they also were liberated. Modi ji laid the foundation of Ram temple, and in the coming month, he will sanctify its image also. And 3, there is a very important factor. You know Arunachal Pradesh, which is now called Meghalaya, and also Odisha. There was an anthropologist and a missionary whose name was Verrier Elwin. And he used to convert all these tribal people by running hospitals and then starting educational institutions. Nehruji came to know about it,
Nehruji was also interested in the improvement of the life of tribal people. Therefore, what he did was, he appointed this Warrior Elvin as gave him a government position and gave lot of money to him to improve the tribals. The result was all these tribals were converted into Christianity. And now, because all of them are converted, there is the problem today, which is going on even today. Not only that, after some time, after converting all these people, this Warrior Elvin went to Britain. He was a British person. He went to Britain and then started a movement saying, since this is a purely Christian area, it must become a separate country. And that politics took place very rigorously that time. I think those who are quite aged should be remember these things. Youngsters may not, because though youngsters have, there were no the youngsters were not there to read the newspapers of that time. And the next one, there are two very important writers who are great scholars and who have done a lot of research in this subject, cultural heritage of India. And they were one, Ram Swarup, and the other, Sitaram Goyal, who has written many books, most important of them being Hindu Temples, What Happened to Them, 2 volumes. I am specially mentioning, and all these books, not only this, but there are many, many books. They are published by Voice of India publication. I am specially mentioning this, saying that I have read all the publications of Voice of India publications, and it has enlightened me in the matter of cultural heritage of India. And some of them now here, just now asked me to spare some time to discuss about my novel Avarana, about which I think most of you have read. Now, this was possible for me because I have read all the publications of Voice of India. Another factor, when Salman Rushdie published his novel Satanic Verse, the mullah of Iran asked all the Muslims of the world to kill Rushdie. Now, he was a British, he was an Indian born, but he was a British citizen. Now, for that, British police, especially the investigating branch of the British police, are called Scotland Yard. They give him so much of protection because once this was given, nobody knows
which person would come and then kill him and in which situation, etc. But the protection, the British police gave him protection. Nobody knew in a particular day where he is. They were changing the places of that person, giving him all the protection and all his requirements, whatever the books he wanted, whatever the newspapers he wants, all this, they were supplying to him, but kept him, gave them the protection for more than 2 years, and gradually, the heat was cooled. Now, that is what Britain did. But in India, but even before this book reached India's bookshelves, the government of India banned it and to protect the faith of the minority. This is the kind of freedom of expression, freedom of writing that we have in this country. Because the governments are very quick in banning the books. You write, depending upon what you touch some fact, some thought, and immediately someone will put a case to the police or to the court, and then you will be arrested. But in any free country in the West, such thing will not happen. And now, stories, literature, and Adhyatma. Vedas are full of stories, and so are Upanishads. Kathopanishad and Nachiketa story of Kathopanishad are examples. As R.D. Ranade has explained, Buddhism and Jainism were the products of the Upanishadic age. As it is clear, Dhammapada does not reject Brahmanism, but clarifies it. There were a number of seekers of truths in that age, which was extended to more than 500 years. There came a thinker who summarized the teachings of all the Upanishads. His name was Badarayana. He called his book Brahma Sutra. His writing was so succinct that it became more difficult than studying the Upanishads. An Acharya named Shankaracharya explained these Brahma Sutras taking the help of the original Upanishads and the Bhagavad Gita. He called it Advaita. After a couple of centuries came another Acharya called Ramanuja, and he called his explanation Vishishtadvaita. After some years came another Acharya called it Dvaita. Now all these explanations were so complex that only scholars could understand and ordinary people could not. Now, then, how can ordinary people understand Vedas? There came two great rishis who explained the meaning of the Vedas. Their names were Valmiki and Vyasa, who created stories or extended the existing stories to
preach the essence of the Vedas. The later poets like Bhasa, Kalidasa and Bhavabhuti used Upakathas of Ramayana and Mahabharata. Each sloka of Raghuvamsha, for example, is a statement of values. Modern writers of Indian languages have used the stories of these two epics, but many modernist writers are following Marxist and existentialist ideologies. Now, there is a very important thing which we must clearly understand. Savarkar has defined who is a Hindu or what is Hinduism. And what Savarkar says is, all those who consider the country stretching from the river Sindhu to the three seas as their fatherland and the sacred land as Hindus. And he composed a shloka in Sanskrit, and that is, A Sindhu Sindhu Paryantam Yasya Bharata Bhumikam Pitrubhu Punyabhumaschaicha Savairhi Hindu Riti Hitismrutaha. Again, I read the English translation. All those who consider the country stretching from the river Sindhu to the three seas as their fatherland and the sacred land as Hindus. Now, there are Vedikas, there are Jains, there are Buddhists, there are Shaivas and Sikhs, but all of them consider this land as their fatherland, and it is their sacred land. But Christians, Muslims and Jews consider Vatican as their sacred land, Muslims consider Mecca as their sacred land, and then the Jews consider Jerusalem as their sacred land. So, but therefore, they are not Hindus, but they are in India. Now we come to Ambedkar. Dr. Ambedkar accepts Savarkar's description. When Ambedkar decided to change his caste from untouchable one, the Christian missionaries and the Muslim mullahs tempted him to embrace their religion. But Ambedkar wanted to come out of the untouchable caste, but not out of his fatherland or the sacred land of his country. Ambedkar wanted himself and his followers to retain the parental and sacred right of this land. Hence, he embraced Buddhism, because for Buddhism, India is the fatherland. It is the magnanimity of Ambedkar. But it is disgusting that untouchability is not fully eliminated in some rural patches in spite of strict laws. About Savarkar, who gave this definition of fatherland, then he says, what he did was, whenever he was invited for a lecture to a town or city,
Savarkar would put the condition of allowing the untouchables of this place to the most popular temple. He would say, in your town, if you don't allow the untouchables to the temple, I will not come to your city. Then naturally, this way he calculated it, Ambedkar. And Savarkar, Ambedkar and Savarkar were friends. And Ambedkar knew knew this shloka of Savarkar. And it influenced the mind of Ambedkar to accept Buddhism as his religion and not, he did not fall prey to the temptation of Christianity or Islam. Here I stop. Now my plan is, all these four scholars will have 12 minutes each, and I want to give at least 20 minutes for the audience to react to this subject, and at the end I will conclude using only 5 minutes. Thank you. Thank you. Who will? Should I? Oh, please do. Hello. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. नमः सभायै, नमः सभापतिभ्यश्च. अस्माकं सभागारे उपस्थिताः सभाध्यक्षाः, पूज्याः भैरप् महोदयाः, मम अनुजाः दिगंत शर्मा महाभागाः, मयंक महोदयाः, यतीन्द्र महाभागाः, उपस्थिताः पूज्याः तिवारी महाभागाः, रघुवीर चौधरी महोदयाः, मम भगिनी कुमुद शर्मा महोदया, अपिश्च नरेन्द्र पाठक महोदयाः. मम मनसि एका द्विधा जाता, कीदृश्यां भाषायां भारतस्य कल्चर, भारतस्य संस्कृत्याः चिन्तनं करणीया. तेन कारणेन अहं संस्कृतस्य आधारं स्वीकृत्य मम विचारं स्थापयामि. प्रयत्नं करोमि, कारणम् अहं तु गुजरातात् आगच्छामि. खिचडी इति अस्माकम् अतीव प्रियः स्वादिष्टः खाद्यान्नः. तेन कारणेन अहं खिचडी अपि अधुना प्रस्तौमि. Sir, I would like to add one thing what you have said. I visited the University of California and I met Professor Goldman, the great Valmiki scholar. And he told me one thing. He said, I would like to touch your feet because you Indians are wonderful. You understand the value of culture. And you are the only race on earth which has lived your epics. आपने कल्चर को इस तरह से निभाया है. आज भी रामायण और महाभारत अधुना वयं दृष्टामः यत् अत्र तत्र सर्वत्र नाटकेषु काव्येषु रामायणस्य उल्लेखं भवति. अस्माकं गुजराती भाषायां विनोद जोशी महाभागः अत्र अस्ति. तेन कविना अपि सैरन्ध्री इति महाकाव्यं लिखितं, प्रबन्धकाव्यं लिखितं. कारण सभी जगह संस्कृति का एक हमें देखना चाहिए कि आज के संदर्भ में मैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को आई एम एग्जामिनिंग इन 2023 एंड 2023 में मेरे पास दो विकल्प है. एक है जो
पुनर्जीवन हो रहा है राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये भारत का रेनेसां चल रहा है, एक पुनर्जीवन हो रहा है, हम देख रहे हैं चारों ओर। गंगा तो हजारों साल से बहती है, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर को ऐसा विचार नहीं आया कि हमें उसको अवगाहन करके स्नान करना चाहिए, गंगा की पूजा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, नदी की पूजा करना, दर्शन करना, ऐसा ये दैट इज वन एस्पेक्ट। एंड सेकंड एस्पेक्ट, we have in audience one of the very renowned IT specialist, Sanjay Chaudhary, and because artificial intelligence is coming and knocking our door, where is the culture of India and how we will react to it? So these are the two issues which I would like to say and examine, if time permits. I don't know, time is very limited, but यदा यदा समय लाघवमस्ति तर्हि वयं सर्वे उत्सुकाः, कारणं संस्कृते एका सूक्ति वर्तते, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः, सत्पथि महाभागाः जानन्ति ते, यत् तेन कारणेन लाघवेन अपि यदि वक्तुम् इच्छामि तर्हि अहं विचारं स्थापयामि। एकस्मिन् दिवसे एक बार ऐसा हुआ, आई थिंक सिंस जैनेन्द्र जी सेड कि आई कम फ्रॉम सिविल सर्विस, Narendra Bhai, Max Muller has delivered 6 lectures to the civil servants. What India can teach us. And isme, there is a beautiful quote from German philosopher Schopenhauer. He says, in the whole world, there is no study so beneficial and so elevating as that of Upanishads. It has been the solace of my life, and it will be the solace of my death. This is the certification from a German philosopher. So what I will do, let us look, what is culture? What do we, it is as summarized by many people in the world. Neil Ferguson has written a very big book called Civilization, and Sunil Khilani has written an Idea of India, and then Rajiv Mantri and Harsh Madhusudan has written one new idea of India. So these are all, everybody has tried to define, but my way is little different. I will give 5 bhakaras. You see, it is a common behavioral pattern, because Chambu Krishna Sastri, the Sanskrit Bharati Sthapak, he once traveled everywhere and he decided that I will speak only in Sanskrit. And he has no difficulty. He could converse with everyone from Kashmir to Kanyakumari, because everybody knows Om Swastina Indro Vrudashravah. अगर मंत्र बोला जाए तो उनको मालूम हो जाएगा ये क्या है। तो ये कल्चर में कुछ है, लेकिन ये भकार जो मैंने समराइज किए 5 भकार है। पहला है भाषा। भाषा हमको कनेक्ट करती है, भारतीय भाषा हमको कनेक्ट करती है। मैं संस्कृत में बोलूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं कहाँ भी जाके संस्कृत में बोलूँगा तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि भारतीय भाषा हमारे ब्लड में है। लेकिन हमें चिंता का विषय ये है कि अभी एक जनरेशन की एक सेक्शन ऐसे ही तैयार हो रही है जिसके दिमाग में एक भी भारतीय भाषा नहीं है। तो देयर इज ए गोइंग टू बी रेजिस्टेंस। सो दैट्स व्हाई वी आर 2023 वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। भाषा, भोजन, भ्रमण, भूषा, भजन, ये 5 भकार है जो कल्चर को डिफाइन करते हैं। तो आई विल से कल्चरल हेरिटेज इन ऑफ 2 फॉर्म्स। वन इज टेंजिबल, जो हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। देयर इज ए इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। लाइक इन सौराष्ट्र वी हैव चारणी साहित्य, oral traditions are there which we cannot write, which we cannot translate. Other things we can translate, but there are so tangible and intangible, but there are timelessness. There is a shashwat. The Kerala governor Muhammad Arif Khan साहब ने सनातन का उल्लेख किया। we are representing some very shashwat things in life. I will tell you one thing. Bhairapa ji has mentioned about Ishopanishad. Isha avasyamidam sarvam yat kinchit jagatyam jagat. ये सब विवेकानंद ने भी बोला था when in Chicago that you believe in one God, whereas we believe in only God. There is nothing but God.
Everything is God. Now, I am hiring a taxi in Bombay, and I know my driver is Muslim, but he also touching the steering wheel. उसको ऐसे ऐसे लगा के चलाता है सुबह में. I know a Christian व्यापारी who comes to the shop, touches the stepping stone and then enters, because he knows this is in his blood. ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत. ये हमारा कल्चर है. That's why Subramanian Swami has always argued that our DNA is one. मोहन जी भागवत बार बार कहते हैं कि हमारा सबका डीएनए एक है. तो ये डीएनए ये है कि हम पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन उपनिषद के जो सत्य है वो हमारे ब्लड में है. एक छोटा उदयपुर में, हमारे गुजरात के ट्राइबल में, अगर उनका एक ही लड़का है और वो मर गया, तो भी वो बोलेंगे भगवान को जो रुचा, वो गमा, वो उनको पसंद आया, वो बराबर है. तो ये ईश्वर को स्वीकारना, ईश्वर का स्वीकार, ये हमारी बेसिक चेंज है. तो मैं 3 भाग में हमारे संस्कृति को देखता हूँ. एक है साहित्य, ललित कला, नृत्य, स्थापत्य. देखिए कि पहली है अभिनीत कलाएं, जिसमें हमारी संस्कृति अभिव्यक्त होती है, संगीत, नृत्य और नाट्य. दूसरा सेट है ललित कलाएं, स्थापत्य, शिल्प और चित्रकला. और तीसरा है जो बहुत महत्व का है आजकल, जीवन जीने की कला, जो जीवन जीते हैं हम. और इसमें आउटर और इनर लाइफ. आउटर लाइफ में 3 चीजें हैं: पाकशास्त्र, आयुर्वेद और योगा, जो हमारा स्वास्थ्य का रक्षण करते हैं. इनर में जो है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, एंड दैट इज आई रिमेंबर हमारे फ्रेंड संजय चौधरी जी. I will go through some of the cultural aspects, 6 to 7, because we have very little time. If I have to go to political culture, what is our cultural heritage? Then go to Kalidasa. And in Raghuvamsh, Satpati ji, Jnane Maunam Kshama Shaktau Tyage Shlagha Viparyayaha, means राजा कैसा होना चाहिए. रघुवंश में कालिदास ने बताया कि जब ज्ञान आता है राजा में तो मौन हो जाता है, जब शक्ति आती है तो मौन, वो क्षमा देता है, और जब अपनी प्रशंसा होने वाली है तो वो दान देते हैं. तो विपर्य, उदासीनता बताते हैं कि हमारी प्रशंसा मत करो. ये रघुवंश के राजाओं, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर है. इफ आई हैव टू से सोशल कल्चर, व्हाट इज आवर सोशल कल्चर? द सह अस्तित्व, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. ये हमारा कल्चर है. वी वुड लाइक टू शेयर, वी वुड लाइक टू प्रे फॉर एवरीवन. द इंक्लूसिव कल्चर, वेरी मेनी पीपल आर यूजिंग वेरी एट ए ड्रॉप ऑफ हैट दैट वी शुड बी इंक्लूसिव, वी शुड बी टॉलरेंट. अरे यार, ऐसी तो कोई भूमि नहीं है जो इतनी टॉलरेंट है. सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने कभी नहीं कहा सर्वे हिंदवः हिंदू जनाः सुखिनः सन्तु, ऐसा नहीं बोला. सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग अच्छे हो, सब निरामय हो, ये हमारा है. बट द बेसिक थिंग विच गवर्न्स अस, एंड वेयर when the artificial intelligence come into way, and ChatGPT, and then the 10G and all that will be there, and robot will be sitting besides me, then I will say, robot will say, aham tu yantra pragya, artificial intelligence, aham tu yantra pragya. My reply will be, aham tu chaitanya pragya. I represent the chaitanya, the supreme consciousness, pure consciousness. I represent that. So that is aham brahmasmi, tattvamasi, sarvam khalu idam brahma, prajnanam jnanam. ये सब है. that is where the artificial intelligence जब आएगा, अभी तो आ गया है, लेकिन when there will be lot of this thing, and they say that there is going to be a big wave of inferiority complex in human beings, because the robots will be smarter because they will not have wife, no, they don't have tension, or husband even, for that matters. तो
तब हमें we have to say that we are creativity का जो supreme power जिसके पास होगा, those who can articulate, even they will articulate. So how to encounter that thing? And last but very important thing is that you see what Bhagavad Gita is preparing us. वो हमको तैयार करती है to handle uncertain situations. Finally, education will not be for any STEM or 3R or everything will disappear. Because everything is here. When the people are talking about the relevance of classroom, they said the YouTube revolution has changed everything. You can't go to classroom because everybody knows everything, even the medical science. The professors are telling that when I go to the classroom to teach the surgery of a gallbladder, the student knows exactly that how and 27 kind of things. So I would like to say that it is our Chaitanya which would prevail, and finally it is the Vani which has been given to us. Vanne eka samalam karoti purusham ya samskruta adharyate. I think that will govern us. Culture of India is eternal, और जो शाश्वत मूल्य है उनका हम स्मरण करके इस सदी का हमारा एजेंडा निश्चित करेंगे, तो we will be supreme power and Jagat Guru of this newer world. Thank you very much. Yes, thank you. Namaskar, respected chairs, my fellow speakers, and all the culture souls present in this august house. At the very outset, first a disclaimer. Neither am I a scholar, nor an original thinker. The speech that I am going to deliver has been prepared entirely from the writings of Sri Aurobindo, which is being titled as A Glimpse of the Cultural Heritage of India, with special reference to governing force of India's magnificently abundant artistic heritage through the lens of Sri Aurobindo. The speech, therefore, ought to be rather rightly called a kind of presentation of a compilation of Sri Aurobindo's writing on Indian art. Before we glimpse through the governing force of India's magnificently abundant artistic heritage in the light of Sri Aurobindo, let us first plunge into the very meaning of heritage itself in the context of the very description of the word culture, alongside the governing force of the great culture of India in general. For then only we would be able to rightly appreciate the governing force of India's all great artistic creation. First, the idea of cultural heritage. The concept of cultural heritage is an evolving one and is indeed constantly evolving. It may therefore be roughly defined as the cultural creation or object of historical importance and interest made by the evolutionary collective endeavor and genius, and is governed by the long-cherished cultural ideas and ideals which is inherited from the past of a people. Intangible yet living cultural attributes or features of a people or a group or society are also included in such a way within its purview that they too become inseparable part of the core idea of cultural heritage. Then how we can define the culture itself? The culture of a people, on the other hand, may be roughly described in the words of Sri Aurobindo as the expression of a consciousness of life,
as the expression of a consciousness of life. But how this consciousness is being formulated? This expression of consciousness formulates itself in three aspects. And what are those three aspects? Sri Aurobindo says that there is an aspect of thought, of ideal, of upward will and soul's aspiration. Number one. Number two, there is a side of creative self-expression and appreciative aesthesis, intelligence and imagination. And lastly, there is an aspect of practical and outward formulation. These are the three aspects through which culture formulates itself. Then the philosophy of a people gives us its mind's formulation of its consciousness of life and its dynamic view of existence. Its religion, on the other hand, formulates its upward will and the soul's aspiration towards the fulfillment of its highest ideal. Its creative expression, impression of its intuition, imagination, creative intelligence, etc., are formulated by art, poetry, and literature. The forms of society and politics provide us an outward frame in which its external life works out with regard to its inspiring ideals under the difficulties of the environment. Then what is the governing force of this great culture? Let us now then turn with the words of Sri Aurobindo towards the fundamental governing force of this ancient, yet great and magnificent and eternally living Indian culture before we glimpse through the governing force of its artistic creation. Sri Aurobindo unequivocally asserts that a spiritual aspiration, I repeat, a spiritual aspiration was the governing force of this culture, its core of thought, its ruling passion, and the whole root of difference between Indian and European culture springs from this spiritual aim of civilization. This is the reason as to why he affirms that Indian civilization was not a mere great cultural system. Then what it was? Rather, it was an immense religious effort of the human spirit. We cannot, therefore, come to an understanding of the true sense and spirit of Indian culture without having a just and right appreciation of the sense and spirit of Indian religion. The rites, ceremonies, system of cult, worship practiced in India cannot be understood without remembering the core and fundamental character of Indian religion. Sri Aurobindo goes on to count that Hindu is popularly credited with 30 crores and more of gods, and he has no objection to adding, if need be, to this mighty magnitude. Here are temples, images, a priesthood, a mass of unintelligent rites and ceremonies, the daily repetition of Sanskrit mantras and prayers, some of them of a prehistoric creation, a belief in all kinds of supraphysical beings and forces, saints, gurus, holy days, vows, offerings, sacrifice, a constant reference to life, to powers and influences of which there can be no physical evidence, instead of a rational scientific dependence on the material laws which alone govern the existence of mortal creatures. Let us therefore to understand and appreciate the deeper sense and spirit and core and fundamental character of the Indian religion of the ages in the magnificently illuminating and insightful words of Sri Aurobindo. He says, it gave itself no name because it set itself no sectarian limits. It claimed no universal adhesion, asserted no sole infallible dogma, set up no single narrow path or gate of salvation. It was less a creed or cult than a continuously enlarging tradition of Godward endeavor of the human spirit, an immense many-sided, many-staged provision for a spiritual self-building and self-finding. It had some right to speak of itself by the only name it knew, the eternal religion, the Sanatana Dharma.
According to him, Indian philosophy is an organized intellectual theory and ordering of intuitive perception of all that is the soul, the thought, the dynamic truth, the heart of feeling and power of Indian religion. We arrived therefore at the heart and core of Indian religion as soon as the Indian spiritual philosophy is put into action and experience. Sri Aurobindo says that Indian culture recognizes the spirit as the truth of our being and our life as a growth and evolution of the spirit. He continues, it sees the eternal, the infinite, the supreme, the all. It sees these as the sacred highest self of all. This is what it calls God, the permanent, the real, and it sees man as soul and power of this being of God in nature. He asserts that the progressive growth of the finite consciousness of man towards the self, towards God, towards the universal, the eternal, the infinite. In a word, his growth into spiritual consciousness by the development of his ordinary ignorant natural being into an illumined divine nature. This is for Indian thinking the significance of life and the aim of human existence. Under the backdrop of the governing force of this great culture as discussed and understood from the writings of Sri Aurobindo, let us now move on to glimpse through the governing force of India's magnificently abundant hieratic artistic heritage of architecture, sculptures, and paintings. According to Sri Aurobindo, all great artistic work proceeds from an act of intuition. They are not really an intellectual idea or a splendid imagination. In fact, intellectual ideas, imaginations are only mental translation of the very act of intuition. All artistic work is therefore a direct intuition of some truth of life or being, some significant form of that truth, some development of it in the mind of man. The highest business of Indian art, according to Sri Aurobindo, is to disclose something of the self, the infinite, the divine, to the regard of the soul. It is to disclose the self through its expression. It is to disclose the infinite through its living finite symbols. It is to disclose the divine through his powers. But where these are to be revealed? The Godheads are to be revealed. The Godheads are to be luminously interpreted, or in some way they are to be suggested to soul's understanding and to its devotion, or at the very least to a spiritually or religiously aesthetic emotion. Then when this hieratic art comes down from this altitude to the intermediate world behind ours, it still carries into them some power or some hint from above. What happens when it comes down to the material world and the life of man and the things of external nature? Even then also, it was not altogether get rid of the great vision, that is to say the hieratic same, the spiritual seeing. And in most good work, we find always something more, that is to say the seeing presentation of life floats as in an immaterial atmosphere. Then how then life is seen in this artistic creation? Life is seen in the self, or in some suggestion of the infinite, or of something beyond, or there is at least a touch and influence of these which help to shape the presentation. There are in India artistic creations of moments of relaxation, of humors and vivid play with the obvious. So all Indian artistic work is not of this type. It is not that all artistic creation realizes this ideal as stated above. In fact, we have plenty which falls short, which is lowered and ineffective, even debased. But it is the most characteristic influence and execution which give its tone to an art by which we must judge. So then the Indian art is one with the central things of Indian culture. We have seen that Indian architecture, painting, sculpture are one in inspiration with the central things in Indian philosophy, religion, yoga, and culture. All forms of Indian art, in fact,
especially intense expressions of their significance. But it cannot be said of Indian literature. For there is much in Indian literature which can be well enough appreciated without any deep entry into these things. Sri Aurobindo therefore sums up that Indian art has been very largely a hieratic aesthetic script of India's spiritual, contemplative, and religious experience. It is, in fact, is identical in its spiritual aim and principle with the rest of Indian culture. If we ignore this distinctive character of Indian art, we will surely fall into total incomprehension and into mass misunderstanding. With my gratitude to Sahitya Academy, I finally conclude here. Namaskar and thank you to all. Okay, thank you. I think it is a self-governed. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वड़क्कम, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। शब्द बहुत हैं, भाव एक है। तो यही हमारी संस्कृति है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ऑन द डायस, एसएल भरप्पा जी, भाग्येश जी, दिगंत जी, यतीन्द्र जी। हिंदी में ही बोलूँगा मैं ज़्यादातर। इस सभागार में उपस्थित भारतीय संस्कृति की विविधता, एकरूपता, समरूपता और इसकी वैभवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी विद्वज्जन। बहुत विस्तृत विषय है भारत की सांस्कृतिक विरासत। इसको 10 मिनट में तो समेटा नहीं जा सकता। इसको कई घंटों में, कई दिनों में भी नहीं समेटा जा सकता। इतनी विशाल हमारी विरासत है। तो मैंने इसका एक पक्ष जो मेरे अनुभव के आधार पर रहा, उस पर मैंने अपना वक्तव्य केंद्रित करने का मैं प्रयत्न करूंगा। इसके अंतर्राष्ट्रीय पक्ष पर कि किस तरीके से जो है हमारी संस्कृति का विश्व पर प्रभाव पड़ा है, और अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा इस पे ज़्यादातर। एकस्मिन् दिवसे, संस्कृत नहीं बोल पाऊंगा, सिर्फ इतना ही आपसे जो था लिया था। एक दिन करीब 2 वर्ष पूर्व मेरे कार्यालय में आए राजदूत लिथुआनिया के। उनका नाम था जूलियस प्रेनेविसियस। तो जब राजदूत आते हैं, मिलते हैं, तो कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं। हम अपनी संस्कृति का कुछ उनको देते हैं, वो कुछ देते हैं। तो उन्होंने जो मुझे दिया उसमें एक थी कॉम्पेरेटिव संस्कृत लिथुआनियन डिक्शनरी। मैंने खोला उसको। लिथुआनिया छोटा सा देश, जिसको शायद भारत में किसी समय जानते भी नहीं थे। जब यूएसएसआर से अलग हुआ तो बहुत लोग जो थे उसको जाने, अभी भी नहीं जानते हैं। बाल्टिक रिपब्लिक है। और आप लोग तो बड़े विद्वान लोग हैं, मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहली बार पता चला मुझे वहाँ से। संस्कृत में बोलते हैं दंत, उनके यहाँ बोलते हैं दंतिस, दंत। धूम, धूम, धुआं। देव, दीव। अग्नि, उग्नि। लाभ, लाभस। सपना, सपना तो सपना ही हम हिंदी में बोलते हैं, स्वप्न। तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे। और जब उनसे बातचीत बढ़ी तो मैं उस समय महानिदेशक था दूरदर्शन का। तो एक होता है, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई कि कैसे हम अपनी संस्कृति को विश्व में अपने लोगों के बीच ले जा सकते हैं। तो काफ़ी देर उनसे बात हुई तो मुझे उनकी आंखों में एक ललक दिखी, जैसे वो कुछ खोज रहे हों और मेरे में भी वो कुछ खोज रहे हों। वो क्या खोज रहे थे कि कैसे उनके यहाँ इतने सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के पहुँचे। अब ये तो विद्वानों को देखना है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं का जो है अब तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं
इसमें बहुत अध्ययन किया गया है, लेकिन एक छोटे से देश के राजदूत की पहली मुलाकात में वो ये जानने का यदि प्रयत्न करें कि मेरी भाषा में भारत का कितना बड़ा प्रभाव है, और उन्होंने बताया कि लिथुआनिया में भारत के बारे में बहुत जाना जाता है, तो मुझे लगा कि शायद हम बहुत कम जानते हैं वहाँ के बारे में थोड़ा सा। अब वो चले गए हैं, उनकी जगह मैंने देखा अभी नेट पर, उनकी जगह एक महिला राजदूत हैं डायना मिकविसीन, उनके बारे में मैं पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो हिंदी और संस्कृत धारा प्रभाव बोलती हैं, और उनमें भी उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए, उनके कुछ इंटरव्यू के अंश पढ़ रहा था, तो वो भी अभी यही खोज रही हैं कि हमारे यहाँ से कैसे इतने शब्द जो हैं उनकी भाषा में पहुँचे। तो ये हमारी विरासत है। आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग तो यहाँ जानते होंगे, इतिहासकार भी हैं हमारे बीच में, बड़े बड़े विद्वान हैं, मितानी और हितीट्स, है ना, तो सब काफ़ी, और हिस्टोरिकल फैक्ट है, करीब 3500 वर्ष पूर्व 1380 BC वो अनातोलिया का रीजन है, जो कि अब ज़्यादातर वो टर्की में है, नॉर्थ सीरिया, वहाँ पर ये रूलर्स थे, इनके बीच में जो संधि हुई वो हमारे वैदिक गॉड्स इंद्र, अश्विन, मित्र, वरुण, इनके उस पर हुई। उनके यहाँ जो है एक हॉर्स ट्रेनिंग का एक मैनुअल होता है, तो उसमें जो है वो वैदिक संस्कृत और आप ज़्यादा इस चीज़ को जानते होंगे, ऋग्वेद, अवेस्ता, जो सिमिलरिटीज़ हैं वोकेबुलरी में, रिचुअल्स में, प्रैक्टिसेस में, और ऋग्वेद जो है वो बहुत पुराना है, सबसे पुराना ग्रंथ है, वहीं से पहुंचा है अवेस्ता। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात पे एक मत होंगे यहाँ पर। तो जिस समय विश्व में पुरानी सभ्यताएं कुछ जानती भी नहीं थी, तब तो हमारे यहाँ वेद लिख दिए गए। वाणी भी कहाँ से आई? वेद वाणी, ईश्वर वाणी। करीब 5000 वर्ष पूर्व भारत का मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। उसमें आप अलोंग द सी रूट जाइए तो इंडियन पोटरी, सील्स, काफ़ी अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। तो यदि मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा इंडिया के बारे में। हर इन्फ्लुएंस हैज फॉलन अपॉन द वर्ड लाइक दैट ऑफ द जेंटल ड्यू। एक शांत ओस की बूंद की तरह, बड़े शांत, देखिए, शांति, अहिंसा, अनहर्ड एंड स्कार्सली मार्क्ड, बहुत शोर शराबा नहीं हुआ, और कहीं जो है हमने उसको बहुत ज़्यादा चिन्हित भी नहीं किया। Yet bringing into bloom the fairest flowers on the earth। ये भारतीय संस्कृति की जो सुगंध है वो पूरी दुनिया में, विश्व में फैली, और जो पुष्पित, पल्लवित करती गई दूसरी सभ्यताओं को। तो ये हमारी गहरी सभ्यता है। और ये कैसे हुआ? इसके लिए हमें तलवार नहीं उठानी पड़ी, इसके लिए हमको आक्रमण नहीं करने पड़े। अशोक ने भी जो था, सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धर्म को सबसे पहले श्रीलंका भेजा, उसके अलावा बाद में वेस्ट एशिया और यूरोप तक भेजा, तो कब हुआ? जब कलिंग का वॉर हो गया, तलवारें थम गईं, उसके बाद शांति का ये संदेश किया। तो इसमें एक, मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में हूँ और कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि मेरा एक जो रिसेंट नॉवल आया था उसमें द राइज ऑफ द देवास में, तो उसमें कुछ इसका रिफ्लेक्शन है। एक नया और एक काम कर रहा हूँ इस समय में, उसमें कुछ मध्य प्रदेश का भी जिक्र आएगा, वहाँ से भी मैं थोड़ा सा लाता हूँ। अवंती जब वो 16 महाजनपदा 16 होते थे उस समय की बात है, तो अवंती में जो थे चंड प्रद्योत महासेन जो थे, उनका राज था, और बगल में कौशाम्बी था,
बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगी, उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी। जो पुराने लोग हैं, आप तो सब संस्कृत के लोग तो सब जानते ही हैं। तो चंड प्रद्योत महासेन ने कौशाम्बी पर अटैक किया। कौशाम्बी पे उन्होंने उसको, किले को, उनका कौशाम्बी का चारों तरफ से घेर लिया। उनकी सेना जो थी बाहर, कि भाई कब तक किले के अंदर इनकी रसद खत्म होगी, खाना पीना खत्म होगा, तो हम इनको जीतेंगे। चलता रहा। उस समय जो था, उदयन जो था वहाँ का राजा बहुत यंग था, तो मृगावती जो उसकी माँ थी, तो शासन व्यवस्था वही संभाल रही थी। तो महावीर स्वामी जो हैं, वो अपना एक शिविर लगाया था उन्होंने उस किले के बाहर उस समय के लिए। और मृगावती को पता चला, तो मृगावती किसी तरह से छिपते हुए, बाहर चारों तरफ तो किले बंदी थी, वो वहाँ पहुँच गई। और वहाँ पहुँच गई, और उस समय कुछ समय बाद वहाँ पे जो था प्रद्योत भी पहुँच गए, जिन्होंने उसके पूरे की किले की घेराबंदी की हुई थी। तो महावीर स्वामी ने जब दोनों को देखा वहाँ पर, है ना, एक अटैक करने आया है और दूसरा जो है उस पर घेरा हुआ है, तो क्या था संदेश? पहला संदेश शांति। और वहीं पर उन्होंने जो था उन दोनों से कहा कि आप अटैक नहीं करेंगे, और उसके बाद वॉर नहीं हुआ, और प्रद्योत ने जो है अपनी सेनाएं जो हैं वो वापस अवंती ले आए। तो ये तो धरती हमारी जो है, वो हमारा जो संस्कृति है, हमारा धर्म है, मैं रिलीजन नहीं कहूँगा, धर्म और रिलीजन में भी बहुत अंतर है, जो कि आध्यात्म से निकला है, स्पिरिचुअलिटी से निकला है, जिसमें कि शांति, अहिंसा इसके जड़ में है। तो हमारा जो धर्म फैला, वो बिना किसी तलवार के, बिना किसी आक्रमण के। अशोक के बारे में तो मैंने कहा ही आपसे। बुद्ध धर्म काफ़ी बाहर गया है। हिंदू हमारा जो है वो भी सबसे पहला, जो इतना बड़ा विष्णु के लिए जो सबसे बड़ा जो टेम्पल है, वो आपका अंकोर वाट। और जैसे जैसे सेंट्रल एशिया की तरफ जो है उस समय वो व्यापारी जाते थे, सिल्क रूट से जाते थे, तो हमारी संस्कृति को, हमारे लिटरेचर को वो ज़्यादा ले जाते थे, बजाय कि वो यहाँ से व्यापारिक सामान ले जाने से ज़्यादा। पूरे रास्ते में सेंट्रल एशिया के कई बुद्धिस्ट विहार बने। बाद में एक ऐसा समय आया जबकि उनको बाय फोर्स उनको तोड़ा गया। वहाँ पे जो थे दूसरे धर्म आए, दूसरी सभ्यताएं जो थे विकसित हुई। अब आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, बाली में, सब जानते हैं लोग कि राम के बिना तो वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता है। 4 मिनट्स है, ओके। इंडोनेशिया में उनके, आप किसी इंडोनेशियन से पूछिए, रामलीला होती है वहाँ पर, तो वो कहेंगे ठीक है, हमने हमारी पूजा पद्धति हमने इस्लाम कर ली है, लेकिन हमारी संस्कृति में राम है। हमारे जो पूर्वज हैं वो राम हैं। तो संस्कृति को छीना नहीं जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक बात मैं ये कहूँगा, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का समय आया, यूरोपियंस आए हमारे, उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि बताएं कि हमारी संस्कृति इन्फीरियर है। थोड़ा मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा, लेकिन हम लोग 2 तरीके से बाहर गए भारत से। कुछ मजदूरी के लिए गए, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, कैरिबियन आइलैंड्स। वहाँ भी हम जो है अपनी संस्कृति को ले गए, अपने राम को ले गए, अपने कृष्ण को ले गए। और उन्होंने, मैकॉले ने जो सूट बूट के भारतीयों को बनाया, वो भी जो थे अल्टीमेटली जब अमेरिका, इंग्लैंड साइंटिस्ट बन के गए, डॉक्टर बन के गए, तो वहाँ पर भी जाकर उनको भारतीय संस्कृति याद आई। इतने मंदिर उन्होंने बना दिए, और जब कष्ट में यदि वो पड़े तो उन्होंने भी जो है
किसको याद किया? भगवान हमारे हनुमान जी को याद किया। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये संस्कृति जो है, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई जो हैं वो इंग्लैंड में हैं, वहाँ के ब्रिटिश सिटीजन, जितना सुंदर कांड का पाठ वो कराते हैं वहाँ पे, मैं नहीं करा पाता हूँ यहाँ पर। जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको संक्षेप में जो है ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बाहर वाले हमें ना बताएं, आकर जब वो बताते हैं कि सत्य क्या है तो हम मानते हैं। जब हम कहते हैं तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये अंधविश्वास है। थोड़े से मैं कोट्स जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ओपनहाइमर, whenever he struggled with his conscience, he turned to Bhagavad Gita. He said in an interview after first nuclear detonation that he thought of Lord Krishna while he was revealing his divinity to Arjuna. Now I am become death, the destroyer of words. जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हाइजेनबर्ग हैं, कार्ल सेगन हैं, ओपनहाइमर हैं, शॉडिंगर हैं, कहीं ना कहीं इसमें सब पे भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपने नाम लिया था जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर का। There is no study in the world as beneficial and so advanced as the Upanishads. जब हाँ, ओके राइट। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारी संस्कृति जो है वो सनातन है, पुरानी है और हमेशा जो है वो जीवित रहेगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। नहीं, श्री भैरप्पा जी, भागेश जी, दिगंत जी, मयंक जी, सामने मेरे दो गुरु बैठे हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, और ढेर सारे दोस्त हैं। तो सबके नाम नहीं लूँगा, नहीं तो कोई छूट गया तो गड़बड़ है। जितने लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा, 1.5 घंटे हो गए हैं, आपको चाय पीने की तलब हो रही होगी और मेरे को 10 मिनट दिया गया है। मैं बिल्कुल 7-8 मिनट में बात ख़त्म करूँगा। मैंने कोई पर्चा नहीं तैयार किया, इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ मौजूद थे, इन्होंने अपनी बात कही, भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात की, दुनिया की तमाम ज्ञान और हमारे देश का सारा ज्ञान किताबों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, सब जगह वर्णित है। आपके पास पुस्तकें हैं, आपके पास योग्य शिक्षक हैं, आपके पास विश्वविद्यालय हैं, आप पढ़ सकते हैं, उनमें से निकाल लीजिए, अपना ज्ञान ले लीजिए। मैं कुछ बातें कहने आया हूँ अपनी पीढ़ी की तरफ से। बात यह है, हम भारत के सांस्कृतिक एकता की बात, उसकी बहुरूपता की बात, उसके समावेयता की बात, उसकी समावेशता की बात बहुत करते हैं, बहुत ज्ञान बताते हैं। कितने लोग उस पर चलते हैं? कितने लोग अपनी नई पीढ़ी को सौंपते हैं? कितने लोग अपने बच्चों के हाथ में ला के भगवद गीता या रामचरितमानस या पुराण की या उपनिषद की किताब देते हैं कि इसे भी पढ़ना चाहिए? हम संस्कृति को नबेरने के लिए, उसे बचाने के लिए लगे रहते हैं। कितने लोगों को पता है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल का फ़र्क क्या होता है? कितने जानते हैं? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडोलॉजी स्टडीज़ के कोर्स में दाखिला ले और वो जाके पढ़े और वो समझे भारतीय संस्कृति क्या है। उसको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, सिविल सर्वेंट बनाना है, एक बहुत शानदार नेता बनाना है। कितनों को चाहिए कि वो विज्ञान भैरव तंत्र भी जाने, वो सौंदर्य लहरी भी जाने, वो गीत गोविंदम भी जाने, वो तमाम बातें जाने, वो भैरप्पा जी की किताब पढ़े, पर्व पढ़े। मैंने अनुवाद में पढ़ी है और मैं उससे लाभान्वित हुआ हूँ।
मैं वासुदेव शरण अग्रवाल की अगर भारत सावित्री पढ़ के महाभारत समझता हूँ तो मैं एस.एल. भैरप्पा की पर्व समझ के भी महाभारत समझता हूँ। कितने लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत को बचाना चाहते हैं, जो साहित्य को बचाना चाहते हैं, हमारी नई पीढ़ी के लोग। मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, हालांकि आजकल वो बहुत चर्चा में है, अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। कितने लोगों के शहर में, कितने लोगों के लेखन में उनका शहर बोलता है। कविता है, यहाँ भी आपने 3 दिन में ढेरों कविता सुनी होगी, लेकिन को कहीं से चला आया है तो शायद ही कोई रचनाकार हो जिसकी कविता से उसका गांव, उसका जवार बोलता हो, उसका तालाब बोलता हो, उसकी दादी नानी की बात बोलती हो। कितने लोग हैं, कितने रचनाकार हैं जिनके रचना से भोपाल बोलता है, मध्य प्रदेश बोलता है, दिल्ली बोलता है। हम शहनाई सुनते हैं, बिस्मिल्लाह खां को सुनते हैं, इंटेंजिबल मामले में उनकी मीड़ मुड़की को समझते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चे के हाथ में कोई ऐसा वाद्य पकड़ाना चाहते हैं जो लुप्त हो रहा है। इसराज लुप्त हो रहा है, मोहन वीणा लुप्त हो रही है, शहनाई जा रही है। शहनाई की मीड़ और मुर्की को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा गीत गोविंदम के उस पद को कि लिखा जा रहा है वो उड़ीसा में और नाचा जा रहा है वो महारियों और भरतनाट्यम के नृत्यांगनाओं द्वारा दक्षिण में, और उसका पाठ नाथद्वारा में राजस्थान में हो रहा है। कितने बच्चे हैं जो जानते हैं कि गीत गोविंदम में है क्या? कौन सा ऐप, कौन सा आईटी सेक्टर ऐसा है जो ऐप बना के आपका कल्चर बचा लेगा? हमें बताएं। अगर नहीं कर सकते हैं तो गौरव गाथा हम गाते रहेंगे। हम लोग अतीत जीवी हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। जब तक हमारे जीवन में सहृदय होने की, भावक होने की, रसिक होने की, जिज्ञासु होने की, अध्येता होने की, आस्वादक होने की भूमिका नहीं पड़ेगी, हमारे बच्चों में नहीं पड़ेगी, भारत की सांस्कृतिक विरासत आप बचा नहीं पाएंगे, नई पीढ़ी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। माफ़ करिएगा, थोड़ा कटु है लेकिन मैं कह रहा हूँ। और भारत की सांस्कृतिक विरासत कहीं नहीं जाने वाली, वो इतनी शानदार है और इतनी सनातन है, हजारों साल से बहती हुई चली आई है आपके पास। उसको 1-2 पीढ़ियाँ ना भी पूछे तो भी वो बची रहने वाली है। लेकिन अगर बचा लें, अगर अपने बच्चे के हाथ में कोई एक अच्छी किताब पकड़ा दें, अगर किसी विभूति की बायोग्राफी पकड़ा दें, अगर कोई रचनाकार उसको बता दें कि तुम्हारा गांव भी बोल जाए, तुम्हारा पड़ोस भी बोल जाए, तो आनंद है। संस्कृत में कहा जाता है समानिवा आकुति समानि हृदयानिवा समान वस्तुओं मनो सहा यथा वसु सहासती। सबकी कमियों को लेके, सबकी अच्छाइयों को लेके, सबको माफ़ करते हुए, दरगुजर करते हुए साथ चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चलो। जो विनोद कुमार शुक्ल की कविता है कि हताशा से एक आदमी बैठ गया था, मैं उस आदमी को नहीं हताशा को जानता था। उस हताशा में हाथ थाम लें तो भारतीय संस्कृति, परंपरा, विरासत सब बचा लेंगे। नहीं तो कोई आईटी सेक्टर, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई बहुत बड़ा ऐप किसी काम नहीं आने वाला है। धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने समय से बोला। Now I give at least to 4 persons to express their reaction, not exceeding 3 minutes each. Yes? Huh? No, no. Yes, we take questions, not reaction. I want to ask one question, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक लिखी। पहला अध्याय ऑस्ट्रिक पे था, दूसरा हिंदू पे था जिसमें बुद्ध और जैन शामिल थे, तीसरा इस्लाम पे था, चौथा क्रिश्चियनिटी पे था। भारतीय संस्कृति के 4 हिस्से किए उन्होंने। इस्लाम संस्कृति से हम कुर्ता पजामा ले आए हैं, ब्रिटेन संस्कृति से हम पैंट शर्ट ले आए हैं, वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा हो चुका है। फिर क्यों हम सिर्फ वैदिक संस्कृति की बात करते हैं? हम वेद के साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की बात क्यों नहीं करते?
Do you want in English, sir? I want an answer that Ramdhari Singh Dinkar has written very good book, Sanskriti Ki Char Adhyay. It includes Hinduism, asterisk, Islam as well as Christianity. We have many values of Christianity as well as the Islam in our Indian culture. Then why we talk about only the Sanatan culture? Why don't want to talk along with the Veda, Upanishad, Sanskrit, along with the Sanskrit, the chemistry, physics, mathematics, and other modern science? Shall I answer? Yes, it is a very relevant question. The difference between the Christians, Islamics, and the Hindus is, for the Christians, each Sunday they preach to the children and even to the grown-up people what is the essence of their culture and what are the moral principles of their culture. They very clearly preach. And Islam, they very clearly preach about their. And also, when our youngsters meet their friends, maybe a Christian friend or an Islamic friend, they will tell them, we say, God is one, Allah is one. But you people say, there are not so many gods and 33,000 gods and all sorts of things. And we speak of celibacy, but you say your Krishna has 16,000 wives. So this way, our children are not properly taught. And we present our Puranas as our religion. See, when you study your subject, you should also study the subjects of your rival also. If you don't study the details of your rivals, you cannot win. Just as in any war, you should know the weakness of your opponent also. And for the children, our parents also are not properly well studies. When we speak of our religion, you see, we say, this God, that God, etc., etc. That is all. But at the philosophical level or at the religious level, our preaching, our education is very poor. That we must accept. And we have to correct it. First, teaching the parents and then teaching the children. Are you satisfied? I will add something. Yes. Oh. भैरप्पा जी से क्षमा चाहते हुए मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ ये पैनल भारतीय संस्कृति पर एकाग्र है, तो कोई वैदिक संस्कृति थोपने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये है कि भारतीयता क्या है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो हर विद्वान, हर स्कॉलर अपने ढंग से ये बात कह रहा है। जब भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो उसमें गणित भी है, खगोल भी है, उसमें वराह मिहिर भी हैं, उसमें आर्यभट्ट भी हैं। हम अपनी एंशंट रूल को, अपनी पुरानी परंपरा को अगर याद करते हैं, वो कोई पिछड़ापन नहीं है। और संस्कृति की बात करना, कल्चर को पुराने से अवगाहन करते हुए वर्तमान में आने का एक कतई अर्थ नहीं है कि आप विज्ञान निरपेक्ष हैं, आप कला निरपेक्ष हैं, आप समाज निरपेक्ष व्यक्ति हैं। मैं तो खुद जाके वहाँ यही कह रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें कि आप पढ़ाइए। और अगर ये कहा जाता, अगर एक भारतीय इस बात के लिए गर्व महसूस करता है कि हमने शून्य का आविष्कार किया, तो वो कोई पुरानापन तो नहीं है। आप उसको भी समझें और उसको संभालें, और बिना सब तरह के डिसिप्लिन में जाए बगैर किसी की प्रगति नहीं होती, तो भारतीय की भी नहीं होगी।
Any other? Yes. One more. Good evening, sir. So, my name is Dr. Jamuna Beni. I am from Arunachal Pradesh. Sir, with due respect, Berappa sir, whatever views you have expressed on Bearer Elvin, uh, uh, I think that is very, very much biased, and I'm totally hurt. आपने कहा कि उन्होंने सारे ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया और एक अलग राष्ट्र की डिमांड कर रहे थे. दैट इज़ टोटली फॉल्स. My father worked with Bearer Elvin for many, many times. We have letters written by Bearer Elvin. I have still that letters also. What to say? I'm just expressing my views that please stop this kind of false propaganda. There is a book written by Dr. Beryl Elvin, A Philosophy for Nefa. Nefa was the erstwhile name of Arunachal Pradesh. Sir, you must read this book. आपके इस जो वक्तव्य है इससे मैं बहुत ज़्यादा मैं आहत हुई हूँ. बेरर एल्विन के बारे में इतना पक्षपात पूर्ण दृष्टि आप कैसे रख सकते हैं. और बाकी यतीन्द्र मिश्र जी की कविताओं की मैं मुरीद हूँ और मैं दरअसल उन्हीं को सुनने आई थी. Please. Thank you. मेरा ख्याल है समय अगर चेयर परमिट करें तो हाँ सॉरी हाँ वही थोड़ा No, there is no need to be hurt about it. About Verrier and Elvin, it is a fact. It is a fact. Yes, next. No, in the beginning itself I said, I do not want to express opinion, I want to give only facts. And even Verrier and Elvin is a fact. Yes. Okay, please. Let it stop now. If chair permits me, we can conclude the session with the remarks from the chair, if you wish so. So, because time is running. Yes. Yes, Thank you you, declare thank it. you, thank you, thank you so much, sir. एक बार सबके लिए आपकी तरफ से बहुत सम्मान के साथ करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करना चाहते हैं. इस सत्र की अध्यक्षता के लिए एस.एल. भैरप्पा सर का बहुत बहुत आभार. भाग्येश झा जी, दिगंत विश्व शर्मा जी, मयंक कुमार अग्रवाल जी और यतेंद्र मिश्र जी, इन सबका धन्यवाद. आप सबका आभार अभी इस सत्र के लिए. लेकिन 20 मिनट का समय हमारे पास है, केवल 20 मिनट का. वी हैव 20 मिनट्स फॉर ब्रेक. आप सभी चाय पीकर समय